patients who had a long history or a short history of diabetes mellitus. So I'll be quite focused in the first presentation on obese diabetics, which Dr. Arush has already said that is called diabesity. Everybody knows that obesity is the current epidemic that has infected the entire affluent population, as well as it is encroaching upon the rural India also. So Punjab expectedly has the highest prevalence of obesity here, and followed by Kerala. So no part of India is exempt from obesity and the epidemic. So what we are focusing would be, this is a long list of this is the National Health Survey that came up with this list, with Punjab topping the list for obesity because of the rich diet and lifestyle. And talking about lifestyle, here lies the reason for obesity. So as we see that as the mobiles are getting slimmer, we are getting bulkier. So this is how we classify obesity. And you see this green things, this is the danger point, the cutoff. So at the body mass index of 35 and above, and you can see that there's another column for Asians now, which is 2.5 units lower than the rest of the world. Why? Because we are more predisposed to develop obesity and its complications. We develop the complications of obesity and diabetes at a lower BMI. So that is a cause for concern for us. And that is why the obesity surgery guidelines include all the patients who have a body mass index of above 32.5. Okay, originally said that this is diabesity, and a lot of this is called syndrome X and various other things, which I'm sure the physicians sitting here would know much better than I do. So abdominal obesity, hypercholesterolemia, increased blood pressure, increased blood sugar levels, and tendency to form clots in the veins. So all these things predispose to the syndrome X, or whatever you call as diabetes. And this is the latest news about the burden of obesity in India, and 62 million Indians, believe me, it's not a small number, which causes about 10 lakh deaths every year, diabetes and its complications. So whatever effort that we can put in to fight diabetes and obesity together is worth it, let me tell you. There's a $1 trillion industry working on developing the drugs for diabetes and hypertension and obesity. And the only one drug, that is orlistat and sibutramine, which were there in the market, are now off the market because of their very harmful side effects and predisposition to suicides. So currently we are left with only diet, exercise and surgery when it goes beyond a cutoff. लेकिन आफ्टर ऑपरेशन ये 140 के आसपास है। एक हफ्ते में आपका जो शुगर रिलीज था वो 240 से 140 में आ गया, और उस टाइम आप दवा लेते थे तब आपका दो टैबलेट्स, और अभी कोई मेडिकेशन पे नहीं है। ओवरऑल फीलिंग कैसी आ रही है? हाउ आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग बेटर? हाउ आर यू फीलिंग बेटर? महसूस कर रहा हूँ, एक्सपर्ट प्रेशर चलते हुए महसूस नहीं होता कि पहले जो वजन पड़ता था अब अच्छा लगता था। जिस सर्जरी से करता था कि हमारा ऑपरेशन है या इसके बाद की कोई इफेक्ट ऐसे नहीं है इस सर्जरी से। तो यूजुअली एक मैसेज जो देना चाहते हैं, जो बता रहे हैं कि ये सर्जरी कराएं या ना कराएं, तो उनके क्या मैसेज है? अगर किसी पेशेंट की अपने कोई ऐसी बात है, वैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उनको सलाह दे सकता हूँ कि ये ऑपरेशन करवा के अपनी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत अच्छा महसूस होता है जब मैं सुनता हूँ। अदरवाइज 20 किलो तो आज के दिन में एक्स्ट्रा
as to how difficult was it for him to decide upon the topics. He didn't really have a good guidance before surgery, and when he came for surgery, I think we took care of it. So you have to know. मैं सबसे पहले डॉक्टर अली का और डॉक्टर आरुष का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। दिल्ली आने से पहले मेरा वजन 192 किलो के करीब था। ऑपरेशन करवाने में बहुत डर लगता है, ऑपरेशन का नाम ही बड़ा खतरनाक होता है। जिस एरिया से मैं आया हूँ, यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, वहाँ पर ऑपरेशन का नाम लेते ही लोगों को डर लगने लगता है, क्योंकि ऑपरेशन आदित्य का होना है, डर दूसरों को लगता है। यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर आरुष और डॉक्टर अली से मिलने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। ऑपरेशन करवाने के बाद मैंने वजन यहाँ पर किया था तब 172 किलो था और आज मेरा वजन 160 किलो है। 30 किलो वजन घटने के बाद मेरी चाल में भी फर्क पड़ गया, मेरे बोलने में, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में काफी फर्क पड़ गया। शुगर मेरी जो 250 से अबव रहती थी वो आज मॉर्निंग में 100। तो मेरी लाइफ का जो चेंज